Hello, this is the lecture number 4 for the chapter Probability for the class 12th. And now in this lecture, we'll discuss the multiplication theorem of probability. Now let us take an example in which in an experiment of drawing two cards, one after the other from a pack of 52 cards, and we are interested in finding the probability that the event king and a queen. We are interested in finding the probability that the event a king and a queen. The probability of the event will be EF. That E is the event of getting a king and F is the event of getting a queen. Now, by using the conditional probability, we have obtained that the probability E upon F, that is probability of getting E upon F will be equal to probability of E intersection F upon probability of F. We know it. Okay, now provided that the probability of F should not be equal to 0. The denominator should not be equal to 0. Now from this, what can we write? The probability of E intersection F, intersection will be probability of E upon F into probability of F. You cross multiply it. That is the probability of getting a king and a queen is this. And also we know that probability of F upon E, that is probability of getting a queen when king is already occurred, probability of E intersection F upon probability of E, provided that PE is not equal to 0, and this will be F upon E. And we know that rather we have F upon E. Now we know that F intersection E is equal to E intersection F, so we can write that probability of E intersection F upon probability of E. So what can we conclude from this? हम इससे क्या conclude कर सकते हैं? That is the probability of E intersection F, probability of E intersection F will be equal to probability of F upon E, this into this, into probability of E. This we have obtained. So this is the second and this is the first. Now this is the intersection probability, this is the intersection. So this will be equal to each other. ये दोनों एक दूसरे के equal होंगे. Okay, this will be equal to each other. So what can we conclude from these two steps? We can conclude that, हम इससे ये conclude कर सकते हैं, that is probability of E intersection F is equal to probability of E into probability of F upon E, and the probability of F is equal to probability of E upon F, provided that probability of E and the probability of F is not equal to 0. Now this is known as the multiplication rule of probability. इसको हम multiplication rule of probability बोलते हैं. Now after that we have independent events. Main thing is independent event. Now what are independent events? Independent events. Independent events क्या होते हैं? What are the independent event? Now consider an experiment of drawing a card from a pack of 52 playing cards in which the elementary events are equally, हम इसे कार्ड जो निकालते हैं equally independent, equally likely event है. Let E is the event of drawing a spade. Let us drawing a spade, and F is the event of drawing an ace. So we have taken these two events. First is spade and another is ace. So what is the probability of E, that is drawing a spade? 13 upon 52, which is equal to 1 upon 4. Now what is the probability of getting an F, that is an ace? We have ace, how many? 4. We have 4, that is 1 upon 13. And also E and F has one ace in common. We have one ace of spade. So what is the probability of E intersection F? What is the probability of E intersection F? One ace is common in the spade. It is 1 upon 52. So this is the probability of E intersection F.
So if we find the probability of getting spade when we have already taken an ace, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ. तो व्हाट वी आर गेटिंग, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/52 है, एफ की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/13 है, तो वी आर गेटिंग 1/13. what 1/13 is the, it is 1/4. So 1/4 is the probability of getting an spade when we have already taken out the ace. Similarly, which is equal to how much? Which is coming out to be probability of ace, probability of E. It means to get a probability of E does not depend on the probability of getting F. F पर depend नहीं कर रहा है. This is not depending on F. E की probability के बराबर है. It is does not depending on F, which is 1/E. देखो ये 1/4 आ गया, 1/4. So similarly, if we take F upon E, सिमिलरली हम F अपॉन ई निकाल लेते हैं. E अपॉन F तो हमारे पास है ही. E इंटरसेक्शन F कितना है, 1 कॉमन है इसमें. सपोज अगर हम F अपॉन E निकालें तो अगेन इट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E. इंटरसेक्शन कितना है, 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितना है, इंटरसेक्शन हमारे पास कितना था, 1/52 था, 1/52. तो इट विल बी 1/52 डिवाइड बाई E की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4. तो इट इज कमिंग आउट टू बी 1/13 विच इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ F. मतलब F की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए E की प्रोबेबिलिटी पर डज नॉट डिपेंडिंग. सो दिस केस इज द एग्जाम्पल ऑफ एन इवेंट विच आर independent. That is, the occurrence of the event one does not depend upon the occurrence of the another event. Then the two events are said to be independent. E and F are said to be independent if the occurrence of the event E does not depend on the occurrence of F, or occurrence of F does not depend on the occurrence of E. The example I have taken, that is to get one event E and F, one is a ace and one is a spade. So these events are known as independent event, that the occurrence of one event does not depend on the occurrence of another event. Now if the two events are, if E and F are independent events, suppose independent events, if probability of F upon E, it will be equal to probability of, because वो किस पर डिपेंड नहीं कर रहा, E पर डिपेंड नहीं कर रहा, provided that probability of E is not equal to 0. Similarly, probability of E upon F will be probability of E, because it is independent event. The probability of E does not depend on the probability of F, provided that probability of is not equal to 0. Now thus the definition of we know that E and F is both not equal to 0. Now by the multiplication rule we have already done. Probability of E intersection F is equal to, हमने probability rule करा था, probability of E into probability of F upon E. ये हमने multiplication rule करा था. Multiplication rule we have done before this, and E and F are independent. So what can we do? Probability of E intersection F is equal to probability of E, और ये F के बराबर है, it does not depend on E, तो it is probability of F. तो ये आपके पास फॉर्मूला हो गया for the independent events. If the event E and F are independent, then the probability of their intersection is equal to product of their individual probability. Probability of E intersection F is equal to probability of E into probability of F. So this is the condition for the independent event. ये आपका main formula है for the second exercise. If the two events are independent, then the probability of E and F are independent, then the probability of E and F will be equal to probability of E into probability of F for the independent events. So this formula will be used in the second exercise of your book, that is 13.2. Question number 1. If you read the question number 1, the probability of A is given as 3/5. Probability of B is given equal to 1/5, and you have to find probability of A intersection B, where it is given that the probability A and B are independent events.
तो इट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो इट इज इक्वल टू दिस, सिंपली है ये 3/25, बिकॉज इट इज गिवन दैट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है. इंटरसेक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी. Now in question number 2, there are two cards are drawn from random without replacement from a pack of 52 cards. बिना रिप्लेस करे करें, ये मेन चीज है. एंड 52 कार्ड्स हैं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लैक? बोथ आपके ब्लैक हो, मतलब पहला भी ब्लैक हो और दूसरा भी ब्लैक हो. इंटरसेक्शन हो गया. एंड का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक इंटरसेक्शन ब्लैक, पहला भी ब्लैक दूसरा भी ब्लैक. इंडिपेंडेंट इवेंट है क्योंकि एक के बाद एक कार्ड रख रहे हैं, दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट. और पहले ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 26/52. विदाउट रिप्लेसमेंट है तो दूसरा ब्लैक की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 25/51. पहला भी ब्लैक, 26/52 प्रोबेबिलिटी होगी, 26 काले होते हैं. और विदाउट रिप्लेसमेंट है तो उसमें 25 आपके ब्लैक बचे और टोटल गड्डी में आपके पैक में 51 कार्ड्स. तो पहले ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 26/52, दूसरे ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 25/51 विदाउट रिप्लेसमेंट है. इसलिए अगर विद रिप्लेसमेंट होता तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 26/52. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2. Now in question number 3, a box of oranges is inspected by examining 3 randomly selected oranges without replacement. 3 oranges निकाल रहे हैं, without replacement है. If all the 3 oranges are good, अगर तीनों oranges good हैं, the box is approved for the sale. तीनों अगर अच्छे हैं मतलब पहला भी good हो, दूसरा भी good हो, पहला भी good, दूसरा भी good और तीसरा भी good हो, तो अप्रूव होगा. तो वो स्लॉट या तुम्हारा जो कंसाइनमेंट है वो अप्रूव होगा. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस, 15 ऑरेंजेस हैं टोटल और जिसमें से 12 गुड हैं, 12 आर गुड. तो इट मीन्स 3 नॉन गुड, 3 आर नॉन गुड, 3 आपके नॉन गुड हैं. द बैड विल बी अप्रूव्ड फॉर द सेल. आपको एक प्रोबेबिलिटी निकालनी है. 15 आउट ऑफ 12 आर गुड, 3 आर बैड, विल अप्रूव फॉर द सेल. अप्रूव हो जाए सेल के लिए. तो अप्रूव फॉर द सेल के लिए इसका मतलब है पहला भी गुड होना चाहिए, दूसरा भी गुड होना चाहिए और तीसरा भी गुड होना चाहिए. तो गुड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 12/15. पहला गुड की प्रोबेबिलिटी 12/15 और विदाउट रिप्लेसमेंट है तो उसमें आप 14 गुड, टोटल 14 ऑरेंजेस रह गए और 11 गुड रह गए. नेक्स्ट के लिए टोटल उसमें 13 रह गए विदाउट रिप्लेसमेंट है और गुड कितने बचे? 10. तो इट विल अप्रूव इफ फर्स्ट इज गुड, सेकंड ऑरेंज इज गुड, थर्ड ऑरेंज इज गुड. पहले ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी गुड की 12 गुड है, 12/15 टोटल 15 है. दूसरे गुड की 11/14 विदाउट रिप्लेसमेंट है. तीसरे गुड की 10/13 विदाउट रिप्लेसमेंट है. सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कंसाइनमेंट या बॉक्स इज अप्रूव फॉर द सेल. सेल के लिए अप्रूव हो जाए. क्वेश्चन नंबर 3 था. सिंपल मल्टीप्लाई करना है. इंडिपेंडेंट इवेंट है, एक के बाद एक निकाल लें. तो टेकिंग ऑफ द सेकेंड ऑरेंज डज नॉट डिपेंड ऑन द थर्ड ऑरेंज. अ फेयर कॉइन एंड अनबाइज्ड डाइज्ड आर कॉइन टॉस्ड. अनबाइज्ड मीन नॉर्मल कॉइन है, डाइज है आपका. तो सैंपल स्पेस क्या होगा? एक पहले हमने कॉइन थ्रो करा है फिर डाइज. तो टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6 आपको सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा. हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6. पहला ये सैंपल स्पेस हो गया. कॉइन थ्रो करने के बाद एक नॉर्मल डाई हम थ्रो कर रहे हैं. लेट ए बी द इवेंट हेड अपीयर ऑन द कॉइन. ए जो मान लिया हेड अपीयर ऑन द कॉइन. तो हेड 1, हेड आने की ये इवेंट है आपकी, हेड आने की ये इवेंट है आपकी, ये इवेंट ए है. और बी इवेंट क्या है? 3 ऑन द डाई. बी इवेंट क्या है? 3 ऑन द डाई. तो 3 यहां पर आ रहा है और 3 यहां पर आ रहा है. तो आपको ये पूछा जा रहा है कि वेदर दे आर इंडिपेंडेंट और नॉट. इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पी इंटू पी बी के बराबर आ जाए. तो पहले आप इंटरसेक्शन निकालिए. इंटरसेक्शन इन दोनों में क्या कॉमन है? ए और बी में H3 कॉमन हो गया. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना है? 1 2 3 4 5 6. सैंपल स्पेस 12 है, 6/12. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो गया? बी कितना है? 1 2 2/12. और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? एक ही इवेंट है इसमें, 1/12. तो आप चेक करो पी इंटू पी बी कितना है?
अगर 1/12 के इक्वल आ जाता है तो P इंटू पी बी, तो 6/12, 2/12, तो कितना आ रहा है देखो, ये तुम्हारा 1/12 भी आ रहा है, 1/12, 1/12. सो देयरफॉर बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल आ रहा है, तो यस दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट. तो सिंपल आप सैंपल स्पेस लिखिए जो दे रखा है, एक कॉइन को थ्रो करने के बाद एक नॉर्मल डाई थ्रो कर रहे हैं, ये सैंपल स्पेस टोटल 12 हो गया. ए कह रहा है हेड अपीयर ऑन द कॉइन, तो हेड वाला ले लिया हमने सारे इवेंट, डाई से कोई मतलब नहीं है. बी में कह रहा है 3 ऑन द डाई, 3 आना चाहिए, तो 3 में ये दोनों इवेंट है, कॉइन पर नहीं देखना है. इंटरसेक्शन में कॉमन आ गया, फिर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालिए, ए की प्रोबेबिलिटी निकालिए, बी की, और ये चेक करिए कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उसके पी इंटू पी बी के बराबर है कि नहीं, तो इंडिपेंडेंट इवेंट, अदरवाइज दे आर नॉट इंडिपेंडेंट. Okay, we'll continue the next lecture. Thank you.